Hello and welcome ICSE Class 9 students. This is question 6 of Competency Question Series. If you have not watched the previous questions of this series, you can check the link given in the description box of this video. So let us begin with this question 6, which is taken from chemistry, the first chapter of chemistry. Let us begin with this question. The following figure represents structural formula of a chemical compound. So what you can see on the screen is a structural formula of a particular compound. Now you can see it is made up of hydrogen, a lot of hydrogens, and carbon atoms also. You can see carbon atoms as well as hydrogen atoms. Now let us see what is the first question asking us. How many carbon and hydrogen atoms are present in the compound? It is very simple. We just need to count the number of hydrogen atoms and number of carbon atoms, and we need to tell. So they are asking us how many carbon atoms are there, how many hydrogen atoms are there. So let us count the number of hydrogen atoms first. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So very simple. You have you can easily count that there are 12 hydrogen atoms. So you can write in the first answer here, number of hydrogen atoms is equal to 12. Similarly, now we will count the number of carbon atoms. So let us count 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Easy. 6. Very simple. The first part was very simple. Let's see what is the second part. It is again simple, don't worry. Write the molecular formula and the empirical formula of the compound. We need to write the molecular formula and the empirical formula of the compound. Molecular formula क्या होता है? Molecular formula is the formula which represents the actual number of the individual elements. So if I am going to write the molecular formula, I have to write the actual number of carbon and actual number of hydrogen. So that is easy. So we know that carbon is 6 in number, so we write C6, and hydrogen is 12, so H12. This is the molecular formula. Isn't it so simple? It's very simple. Carbon कितना है? 6. So we write C6. C means carbon and H means hydrogen. Hydrogen कितना है? 12. So we have written H12. This is the molecular formula which tells us the actual number of the atoms of each element. Now we have to write the empirical formula. What is empirical formula? Empirical formula is the formula in the smallest, simplest ratio. Now what is it? Let us write empirical formula. It is also very simple. Empirical formula में हम क्या करते हैं? ये जो 6 है और ये जो 12 है, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करके देते हैं. यानी कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो जो 6:12 है, 6:12 है, इस रेशियो को हम अगर एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी 1:2 का रेशियो है. कार्बन इस टू हाइड्रोजन का रेशियो क्या है? 1:2. So that formula which tells us the ratio, the simplest ratio of the individual elements, okay, that is the empirical formula. So what is it? CH2. Why CH2? Because it's actually C1H2. 1:2 का ratio. 1 we need not write. 1 we don't write. So instead of writing C1H2, we write CH2. Okay. So empirical formula does not give you the actual number of the atoms. It only gives you the simplest ratio of the atoms. Getting my point? Now the part C. Part C में क्या है? We have to calculate the percentage composition of all the elements present in the compound. Means you have to tell the percentage composition of all the elements. तो यहाँ तो हमारे दो ही elements है, कार्बन है और हाइड्रोजन है. So इन कार्बन का percentage composition बताना है और हाइड्रोजन का भी percentage composition हमें बताना है. Now how do we find out the percentage composition? We need to find out the total molecular weight of the compound first. सबसे पहले इस पूरे compound का हमें molecular weight निकालना है. तो सबसे पहले मैं वो निकालता हूँ molecular weight, जिसे molecular mass भी बोल सकते हैं, molecular weight of the compound. देखो केमिस्ट्री में जब हम mass बोलते हैं और वेट बोलते हैं तो वो सेम चीज मीन करता है. फिजिक्स में वी नो दैट मास और वेट अलग अलग चीजें होती है, बट इन केमिस्ट्री वी यूज इट इंटरचेंजेबली. ओके, सो मॉलिक्यूलर वेट बोलो, मॉलिक्यूलर मास बोलो, इन केमिस्ट्री डजेंट मैटर. नाउ मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल रहे हैं ऑफ द कंपाउंड. कौन सा कंपाउंड है? ध्यान से देख लो. कंपाउंड है हमारा C6H12, जिसमें
6 कार्बन एटम्स है और 12 हाइड्रोजन एटम्स है. नाउ इट हैज बीन टोल्ड दैट एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इज 12. देखो लिखा हुआ है, छोटा सा लिखा हुआ है. इफ यू कैन जूम इट यू कैन सी, और इफ यू आर अनेबल टू सी इट यू कैन इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द video in YouTube, going to the setting. Okay, you can improve it and you can see the text very clearly written. तो हमारा एक कार्बन का एटॉमिक मास दिया हुआ 12 एंड वी हैव 6 कार्बन, सो इट इज 6 टाइम्स 12 प्लस हाइड्रोजन का देखो एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का वेट होता है 1 एंड वी हैव 12 एटम्स, सो 1 इंटू 12, 6 12 कितना होता है 92, 72, राइट, plus 12, so we get 84. 84 is the molecular weight of the compound C6H12. अब हमें निकालना है परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन. कार्बन का देखो देयर आर टोटल ऑफ 6 कार्बन, सो 6 12 72. सिर्फ कार्बन की मैं बात कर रहा हूं, 72 अपॉन द टोटल वेट इज 84, और इसे मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा. इसको मैं सॉल्व करता हूं, देखता हूं क्या आंसर आ रहा है. सो इट विल गिव मी 85.71. एंड सिमिलरली नाउ वी हैव टू कैलकुलेट. आई एम डूइंग इट हियर, द स्पेस इज लेस. ओके, आई एम डूइंग इट एट द टॉप. परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो टोटल कितना हाइड्रोजन है, यू कैन सी टोटल ऑफ 12 हाइड्रोजन्स. दैट मीन्स 12 into 1, the mass of hydrogen alone is 12 and the total mass of the compound is 84. We have already calculated it and we will convert it to percentage. So let us see what does it give. 12 divided by 84, it is giving you 14.28, 14.28%. So we have got the answer. Okay, here is the answer of percentage composition of carbon, which is 85.71, and percentage composition of hydrogen is 14.28%. So I hope you have understood this question. It was a very easy question, only a bit of conceptual. So we are doing these types of questions regularly on this channel. If you don't want to miss any of these questions, do press the subscribe button if you haven't done it yet, and also press the bell icon. So see you all in the next video.